फेल्ट में आई गायब हो गया है, आई हम ऐड कर लेंगे इसमें। आई फेल्ट अ funeral in my brain, poem number 280। funeral का मतलब तो we are aware with it। जो funeral है उसका मतलब तो हम पता है कि जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसी को funeral बोला जाता है। और here Emily Dickinson is discussing funeral that is not actual funeral or the real funeral of graveyard or somewhere else. She is discussing about the funeral that is there in her brain. It means this is very poignant poem. ये poem बड़ी poignant है, बहुत ही thoughtful है, and it is describing the despair and madness, or you can say the irritate. जी So sadness. हाँ, this is the poem is describing the sadness or despair of स्पीकर, जो भी इसको बोल रहा है। अगर आप एक्चुअली ऑल द पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन इज ऑटोबायोग्राफिकल, almost 99.9% poems are autobiographical. She has described about her feeling in her poem. So this is describing the despair, the sadness of her life. Now starting the poem, शुरू करें? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. I felt a funeral in my brain. The title is itself is significant to understand that speaker is not in good mood. बहुत अच्छे मूड में नहीं है जो ये बात करने जा रहा है, क्योंकि एक टॉपिक ही है जो फ्यूनरल का डिस्कशन किया जा रहा है, वो भी अपने दिमाग में। जैसे जब हम बहुत दुखी होते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो एवरीथिंग इज लुकिंग सैड दैट इज अराउंड अस। तो यही बात इसमें है कि जो भी चारों तरफ हो रहा है, दैट एवरीथिंग इज सैड, एंड शी इज इमेजिनिंग, she had just imagined a condition of real funeral, but believe that this is not the actual funeral. Everything is going in her brain. वो सारा कुछ उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल है, चल रहा है। I felt a funeral in my brain and mourners to and fro. She says that she can feel a funeral, she can feel the pain of loss, she can feel the pain of departing soul. If somebody is going or leaving from some dear people, she can feel the pain of her own loss, and उसको इमेजिन करके बोलती है एंड मॉर्नर्स टू एंड फ्रो, एंड ऑल द मॉर्नर्स जो शोक करने के लिए आए हैं, दे आर टू एंड फ्रो, दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड। केप्ट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इसमें रिपीटेशन है, alliteration आप बोल सकते हैं इसमें। kept treading till it seemed that sense was breaking through, and they were just moving. The meaning of the treading is making a movement, and they kept treading. It means the mourner were moving around and they are treading, they are just moving around till it seemed that sense was breaking through. It means the sense, the sense, or you can say uh, the normal condition of a person is become abnormal. जो normal condition होती है, जब तक वो abnormal नहीं हो गई, it means it is giving the first stanza is giving the picture of despair, the picture of sadness that our actual funeral is going on. जैसे लगता है वाकई में कोई दाह संस्कार चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उनके आने जाने की जो थाप है, कदमों की थाप या उनके चलने की जो आहट है, उससे जो सेंसेज हैं, यानी कि जो नॉर्मल सेंस है, इट इज नॉट नॉर्मल नाउ, इट इज एबनॉर्मल। एंड अब दूसरा स्टेंजा हम कर रहे हैं। एंड व्हेन दे ऑल वर सीटेड, a service like a drum kept beating। आप देखें सेम तीसरे लाइन में, जैसे पहले लाइन में था ट्रेडिंग, दूसरे में है बीटिंग till I thought my mind was going numb।
And you see, there were a culture or the custom during the time of the funeral beating a drum. So the custom is going on and they are beating the drum continuously, and it is making disturbance in the mind of speaker or Emily Dickinson, and she says that she become numb. The word numb, it means she become interestless. Her all the senses are tranquilized. जैसे जब हम किसी को ट्रैंकुलाइज कर देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, तो इसके सारे सेंसेस ट्रैंकुलाइज्ड हो गए हैं. इट इज नॉट द नॉर्मल वन. पहला रीजन क्या था? द फर्स्ट रीजन दैट मॉर्नर्स वर ट्रेडिंग, इट मीन्स दे आर मूविंग अराउंड. दूसरा क्या है? द ड्रम which is the symbol of funeral is beating, and they are reaching as that tone that she or her mind feels numb, senseless, tranquilized. नाउ स्टेंजा नंबर 3 पे बढ़ रहे हैं. अगर आपको दोनों स्टेंजा में कोई दिक्कत ना हो तो बढ़े. गिव मी योर नोट प्लीज. शुड आई गो अहेड? Yes, sir. थैंक यू. नाउ स्टेंजा नंबर 3. And then I heard them lift a box. कुछ चीजें हमने देखा भी है कि जैसे जब फ्यूनरल होता है, किसी का दाह संस्कार होता है, तो उसके पहले डेड बॉडी को उठाया जाता है. बीच में एक बड़ा ही फनी सा एडवर्टीजमेंट बड़ा पॉपुलर हुआ था. ये मैं आपको इसको रिलेट करवाने के लिए केवल बोल रहा हूँ कि एक म्यूजिक सा है जिसमें फ्यूनरल बेयरर हैं, 4-5 हैं, वो डांस करते हुए फ्यूनरल बॉडी को उठाते हैं. आप लोगों में से हम सभी लोग सोशल मीडिया से इतने अटैच्ड हैं कि उसका म्यूजिक भी कभी कभी कॉलर ट्यून बना हुआ है. सो कई सारे मीम्स बने हुए हैं. लेकिन ये वो सिचुएशन सीरियस मोमेंट को फनी करने का है. इसमें कोई भी मोमेंट नहीं था जिसमें उसको फनी किया जा सके. सो एंड इसमें तीसरे नंबर को हम देखते हैं, वो लगभग जो डेड बॉडी है उसके बॉक्स को उठाने का पूरा दिखाया गया है. एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट अ बॉक्स. देम इट मीन्स द मॉर्नर. द पीपल वर जस्ट लिफ्टिंग द डेड बॉडी इन अ बॉक्स and creak across my soul. You see, creaking voice is always familiar with creaking of the door. जब कोई दरवाजा बंद करते हैं पुराना, तो उसमें से जो आवाज निकलती है चर्र से, वही वाली आवाज है क्रीकिंग. तो इसमें उस आवाज को किस तरह से मेटाफोरिकली सिंबलाइज किया है. एंड क्रीकिंग अक्रॉस माई सोल, इट मीन्स द लिफ्टिंग ऑफ द बॉक्स वाज मेकिंग अ क्रीकिंग साउंड बिकॉज ऑफ द वुडन furniture, and the it was not the literal one that it is making a creak. It was looking that a soul, it is just splitting the soul. जैसे किसी के सोल के दो टुकड़े कर रहा हो. यानी कि जब अपने डियर वन की किसी को कोई बहुत ज्यादा चाह रहा हो, उसकी डेड बॉडी को बॉक्स में उठाकर ले जाया जा रहा हो, उस समय के कंडीशन को पूरी तरह से सिंबलाइज कर दिया इन्होंने. हाउ ब्यूटीफुली शी हैज given the feeling in these two lines. And then I heard them lift a box. It means they are just going to put the dead body. उसके बाद में जब dead body उड़ जाएगी तो कोई रह नहीं जाएगा. And creak across my soul. It was like the creaking sound, and it was just splitting my soul. It was just breaking my soul with those some boots of lead. It means the person who were just holding, they were trying to hold the box, they put on boot that was of lead. Again, then space began to tall. You see, she's talking about the space that was vacated, that was vacant after putting the box. You see, she says after taking the box, again then space began to tall. It means the space was very horrible. She was not, she
तीनों सारे स्टेंजा में आपको एक चीज लिखने को मिलेगा कि लास्ट वाले में वो अपनी मेंटल कंडीशन को बताती है कि शी इज नॉट गुड एंड बिगिन टू टॉल, इट मीन्स इट स्टार्टेड टू रोम, इट स्टार्टेड टू डिस्टर्ब हर माइंड अगेन। और बिगिन टू टॉल का एक लिटरल मीनिंग भी है कि दे हैव स्टार्टेड, दे हैव प्रोसीडेड टू टेक द बॉक्स अहेड। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4, as all the heavens were a bell। क्रिश्चियन डेथ की बात हो रही है, क्रिश्चियन रिलीजन की बात हो रही है, क्योंकि इसमें जो मरा, जिसकी डेथ हुई है वो एक क्रिश्चियन है। तो इसमें बेल की बात, जब ग्रेवयार्ड में जाते हैं तो घंटी भी बजाई जाती होगी। आई हैव नेवर सीन इट बट आई कैन इमेजिन, क्योंकि इसमें बेल की बात है कि एज ऑल द heaven were a bell and being but an air, when the body was in graveyard there was the sound of bell, and it was looking that all the heavens, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा आसमान या स्वर्ग कह सकते हैं। हेवन, स्वर्ग का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न में नहीं है, उसमें हेवन है, इट इज लाइक द अबोर्ड ऑफ द गॉड। तो ऑल द हेवंस बिकेम द बेल, एंड उसको सुनने वाला कौन था? एन एयर, द एयर ऑफ द मॉर्नर, द एयर ऑफ एमिली डिकिंसन। यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड घंटी बन गया हो, घंटा बन गया हो, और उसको सुनने के लिए उसके साउंड की ब्रस्टिंग वॉइस को आप थोड़ा सा इमेजिन करिए। वो केवल केवल एक कान सुन रहा है, एंड दैट एयर इज ऑफ एमिली डिकिंसन। बिकॉज 4-10 लोग आते हैं किसी की डेथ में, थोड़ा सा समझा दिए, ये जो होना है वो तो हुआ ही, लेकिन उस लॉस का जो जो भी आउट एंड इन है वो केवल देखना पड़ता है जिसका लॉस हुआ है। तो वही बात इसमें है कि ऑल द हेवंस वर अ बेल एंड बीइंग बट एन एयर, बट आई वाज द पर्सन हु, सभी सुन रहे थे, बट that was very poignant, that sound was not charming for me now। क्योंकि पिछले वाले पोम में भी हमने बेल की बात की थी, जिसमें न्यूटन रुका हुआ था, सॉरी नेपोलियन रुका हुआ था अपने ट्रेड्स के साथ में, कि क्योंकि दैट इज वेरी ऑस्पिशियस। लेकिन यहाँ पे उसी बेल की बात की गई है, क्योंकि द टाइमिंग ऑफ द बेल इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्यूनरल। एंड आई एंड साइलेंस some strange race wrecked solitary here। ये मैं रुक रुक के इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इनका स्टाइल ही ये है लिखने का, कॉमा स्लैंट लगा करके। तो आप देखें ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है एंड आई, इट नीड्स सपोज, एंड भी लगा हुआ है उसके बाद में, फिर भी एक कॉमा लगाया गया है। एंड आई एंड साइलेंस some strange race, she says that now she is in very deprived condition, she is in very it like a dilapidated castle, कोई कोई टूटा फूटा खंडहर जैसी स्थिति। क्योंकि खंडहर कब बनता है? सबसे पहले वो एक महल होता है, जब लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, कोई देखभाल करने नहीं वाला होता है, तो खंडहर हो जाता है। तो वही बात है कि नाउ, अब जो उसका नियर और डियर गया, उसके बाद की कंडीशन क्या है? एंड आई एंड साइलेंस, शी इज वेरी हेल्पलेस, शी कैन डू एनीथिंग, शी जस्ट कैन सी द थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि इस चीज पे किसी का बस नहीं चलता। सम स्ट्रेंज रेस wrecked, it looks like some strange race are wrecked। आदमी का जो सोचने का तरीका उस समय होता है, that is not the normal one। जब किसी को कोई छोड़ देता है, किसी के डियर वन की जब डेथ हो जाती है, तो it is like a strange race, it is wrecked, टूटा फूटा, it is like खंडहर, it is like dilapidated place, solitary, sannata, or you can say the mental state is pictured enough of a person who lost his dear ones. Solitary here, it means everything is calm, everything is different, that is not the normal one। और लास्ट इसका जो हम अब पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंजा, that is open ended in effect,
क्योंकि लास्ट लाइन को जैसे कि पुराने वाले पोएम में था, उसी में इसमें भी मिलेगा। शुड आई गो अहेड फॉर द लास्ट स्टैंजा? Yes, sir. ओके। एंड देन अ प्लैंक इन रीजन। प्लैंक का कई मतलब होता है। प्लैंक इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज इवन। दोनों हाथों को आगे करके किया जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसमें 1 मिनट का 1-1 सेकंड पता चल जाता है। बट दिस इज नॉट दैट प्लैंक, दिस प्लैंक इज द शिफ्ट। रीजन का मतलब होता है जो हम तार्किक शक्ति, क्योंकि उसमें आदमी बहुत इमोशनल होता है। जब कोई किसी को इस कंडीशन में होता है, द पर्सन इज वेरी इमोशनल, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है। कितना भी बुद्धिमान इंसान हो, चाणक्य ही क्यों ना हो, वो भी इमोशनल होगा, क्योंकि द पर्सन इंटेलिजेंस इज अनदर थिंग, soul and emotion is another thing. And the time when everything was gone, happened, passed away, then Emily Dickinson क्या करती है? And then a plank in a region, she started to think reasonably, she had started to use her faculty of brain, broke and I dropped down and down। इसके दो मतलब है, मैं दोनों को बताऊंगा जो मैंने पढ़ा हुआ है। broke and dropped down and down and hit a word at every plunge. You see, when she started to think reasonably, she started to think deeply. She dropped down and down. It means she had started to think and making a reason that why these things are there, why people are behaving emotionally, why people are just going away or moving। सारी चीजों पे सोचना शुरू कर देती है। And hit a word and she, उसके बाद में लगता है she has started to face a world, यानी दुनियादारी को, अगर हम कहें दुनियादारी की समझ या दुनियादारी की तरफ देखना। she started to see the world that are around her at every plunge। प्लंज का मतलब छलांग लगाना होता है कभी कभी। तो यू सी एट एवरी प्लंज, एट एवरी थॉट, at every region she was making with, she was just hitting the word, she was just facing the word that things are going like that, क्योंकि लोगों का आना जाना जिंदगी में ऐसे बना रहता है। and finished knowing, यहाँ तक तो सही है। and she finished knowing and she became aware that this is the part of the life that people have to go and people have to come। उसके बाद में जो एक वर्ड्स डैश के साथ छोड़ दिया गया है, देन, that is in fact a question in itself। what what is the real condition of her now? She is relaxed, she is cooled, or she is still in pain? So that may be the another one, और या कोई और फॉर्म पढ़े तो इसमें समझ में आएगा। तो यही इतना था। तो these are the explanation of selected poems। एक पोएम आपकी छूटी हुई है, इफ आई शुड डाई एंड यू शुड डाई। ये वाला किसी और लेक्चर में फिनिश करेंगे, बिकॉज आई कुडंट मैनेज टाइम टू रीड इट। सो आई होप दैट थिंग्स आर Yes, क्लियर। sir. एंड if you think thank you, and if you think that you can add something, you are most welcome। आप लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज में ऐड की जाती है तो मेरी जानकारी कृपया बढ़ा दें। So please share the PPT as soon as possible. I'll Anusar, Thank you, sir. I'll Thank Sir, you. share। I wanted to know one thing. Uh, Yes। जैसे ये poem is about funeral and her despair mood. So, is there any reason behind why she is feeling so? Is there some symbolic reason, या मतलब wars की वजह से वो ऐसा करी थी? क्योंकि मेरा initial lecture छूट गया है half an hour का. So, is it due to some reason? अच्छा, तो you yes ma'am, you see the previous lecture even justify, or the previous discussion justified that she was living at one place and the theme of her writing is death, Okay. the theme of her writing is despair। Actually, when you will find her writing this, I have there is one beautiful poem that is about death in fact। So there may be the reason that she lost a lot in her life, she couldn't get the proper
opportunity to excel because of being a female during the time of her century. So she also lost two of her friends who were everything for her. She also she was also failed in her love relationship. She never married. So we can understand the psychology or the psychological state of a person who is going through these things. So the discussion or the writing, mm, the possibility is that the writing will reflect her or the person's personal life. It is autobiographical enough. So there are many poems that is not autobiographical even. She is discussing about the Okay. nature, but most of her poems are autobiographical that shows her poignant condition. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so You're welcome. much. Anything else? I really appreciate your teachings Uh, and that you have given a very important ideas and the thinking or the thoughts which you have shared related to this Emily Dickinson, the very American poetess. Really, I just think about Emerson's transcendentalism. uh, in the very yeah, uh, yes, sir. clarity you have reflected in this poem related to the theme and the concept what Emily Dickinson kept in the mind at the time when she wrote that poem. So I really very happy to see that you have given a very meaningful ideas and thoughtful ideas related to the mythology and other things related to the life and I think the practical examples you have shared in the poem. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Talansar. This is